कनाडा के लिए अप्लाई किया नहीं किया है? अगर नहीं किया है तो आज ये वीडियो देखना, और अगर किया है तब भी देखना और पूरा देखना, बिकॉज ये वीडियो में हम बात करेंगे आज कि क्या कनाडा आने का ये बेस्ट टाइम है या नहीं है, एंड व्हाट अबाउट इट्स प्रोज एंड कॉन्स। वेल, एज पर द गवर्नमेंट ऑफ कनाडा का डेटा जो आया है 2022 का, वो ज़बरदस्त डेटा है। एज पर द डेटा 39.5 मिलियन पॉपुलेशन कनाडा की हो गई है, और 2022 में 1 मिलियन से ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ हुई है यहाँ की। और ये जो पॉपुलेशन ग्रोथ है, ये जितने भी G7 कंट्रीज़ हैं, टॉप 7 कंट्रीज़, कनाडा की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, विच इज़ 2.7%। लास्ट पॉपुलेशन इंक्रीज जो हुई थी दैट वाज इन 1956, जब हंगेरियन रेवोल्यूशन हुआ था। तो हंगेरियन रेवोल्यूशन वाज 65 ईयर्स बैक। अब जो कनाडा की जो पॉपुलेशन ग्रो हो रही है, इट इज़ गोइंग एट द हाईएस्ट फास्टेस्ट पेस। नाउ लेट मी शो यू समथिंग। दिस इज द कनाडाज पॉपुलेशन एस्टिमेट, जो ये बात करता है रिकॉर्ड ग्रोथ के बारे में। नाउ वी विल सी record high population growth in the year 2022. Canada's population was estimated as at 39.5 million as on January 1st, 2023, after record population growth of 1 million plus. This marks the first 12-month period in Canada's history where population grew over 1 million and the highest population growth was 2.7%. 2.7% के रेट से ग्रो हुई है पॉपुलेशन, एंड लास्ट इतना नंबर हाई था दैट वाज अराउंड 1957 when Hungarian movement was there in 1956. That is what it has been displayed. So population बहुत तेज़ बढ़ रही है, बहुत सारे इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, बहुत सारे इन्होंने बोला है कि अपने डेटा में कि स्पेशली बिकॉज ऑफ द स्टूडेंट्स, बिकॉज ऑफ द immigrants that are coming, temporary and permanent resident, the population is growing so fast. And you can see here Canada is far leading the G7 countries in the population growth in 2022. So जितने भी G7 countries हैं including Canada, so G7 countries कौन कौन है? Canada, Italy, France, UK, Germany, Japan और United States America. So इन सब 7 टॉप कंट्रीज में से कनाडा की पॉपुलेशन सबसे तेजी से बढ़ रही है, which is 2.7%, which is really good news. And back to the topic of today's discussion कि क्या कनाडा आने का ये बेस्ट टाइम है? I'll discuss couple of pros and cons. I'll leave it up to you, but I think, personally, अगर आप मेरे से बात करोगे, I'll say it's a very good time to come to Canada. Now I'll show you something. So I'll show you the start that I've created based on the data. So इस डेटा के हिसाब से अगर आप देखोगे तो इसमें दिखा रखा है कौन कौन से provinces and the percentage of growth in immigration. So this is a growth that has happened over the last year. So अगर ये compare to the last year देखोगे आप, तो सारे provinces का higher है except Ontario. I'll tell you the reason why. अगर आप देखोगे जितने भी छोटे प्रोविंसेस हैं, लाइक इसका न्यू फाउंडलैंड एंड लैब्राडोर, 307% इमिग्रेशन हुई है सिंस फ्रॉम लास्ट ईयर, इतने लोग आए वहाँ पे। प्रिंसेस एडवर्ड आइलैंड, इट्स अ स्मॉल प्रोविंस, 116%, 117% इन फैक्ट। न्यू ब्रंसविक 80% के करीब, नोवा स्कोशिया 42%, मैनिटोबा 89%, सो सस्कैचुअन 93%, एल्बर्टा 50%, ब्रिटिश कोलंबिया और ओंटारियो में सबसे कम है, क्यूबेक 41% एंड यूकॉन में 162% के करीब इमिग्रेशन की ग्रोथ हुई है। दिस इज रिफ्लेक्टेड हेयर, सेम थिंग बाय चार्ट, बट व्हाट आई वांट टू से इज कि जितने भी छोटे प्रोविंसेस, स्मॉलेस्ट प्रोविंसेस इन कनाडा लाइक न्यू फाउंडलैंड, प्रिंसेस एडवर्ड आइलैंड, न्यू ब्रंसविक, नोवा स्कोशिया, दे हैव गॉट द हाईएस्ट परसेंटेज ग्रोथ इन इमिग्रेशन फॉर द दिस इज द डेटा फॉर द फर्स्ट 2 months ऑफ जनवरी एंड फरवरी व्हेन वी कंपेयर टू द लास्ट ईयर, ओके, ऑफ 2022। अच्छा, आप देखोगे ओंटारियो की काफ़ी कम हुई है, बिकॉज ये लास्ट 2 months का डेटा है कंपेयरिंग विद ओवर द लास्ट 2022, बट ओवरऑल 2022 में ओंटारियो में काफ़ी ग्रोथ हुई है इमिग्रेशन की। सो इट इज़ स्टिल स्ट्रॉन्ग, डेटा इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। आप देख रहे हो कितने सारे प्रोग्राम्स हैं, राइट? सो देयर आर वेरियस प्रोग्राम दैट कैनेडा इज़ कॉलिंग पीपल, सो आई थिंक इट्स द बेस्ट टाइम टू कम टू कैनेडा. If you are really planning to move abroad, if you're really planning to move out of your home country and move to Canada especially, then I think it's one of the best time that you should come. There are so many programs to come to Canada. If I talk about Ontario, they have Ontario Immigrant Nominee Program, Agri-Food Immigration Program चल रहा है, AFIP, Canada Experience Class है, people who live, who has a work experience in Canada, Caregiver Program है, Rural and Northern Immigrant Program है, RNIP, Self-Employed Person Program है, स्टार्टअप वीज़ाज हैं, टेम्प्रेरी रेजिडेंट टू PR, TR टू PR वे है, सो बहुत सारे फैमिली स्पॉन्सरशिप है, फेडरल स्किल प्रोग्राम है, फेडरल ट्रेड वर्कर प्रोग्राम है, नॉर्दर्न इमिग्रेशन प्रोग्राम है, द लिस्ट इज़ नेवर एंडिंग, रेफ्यूजी प्रोग्राम्स हैं, फैमिली स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम है, यू कैन कम थ्रू वीज़ा, विजिटर वीज़ा एज वेल. सो
There are a lot of programs, lot of ways to come to Canada, including the New Brunswick program, critical worker pilot program, right, Atlantic immigration program. हर province के अपने अपने खुद के program है. Alberta के इतने अच्छे programs हैं. So this is a very very good time to come to Canada. As per the estimate, if the number keep on increasing like this, the growth rate, the Canada's population will be double in next like about 26 years. So that is the level of immigration that is happening in Canada. It's in the news. If it stays constant in years to come, such a population growth would lead to Canada population doubling in 26 years. And Canada is really calling a lot of people. I think you should take an advantage. If you look at the quarter-wise data of Canada population growth, अगर आप देखोगे तो 2.70% increase है Canada की population growth में different provinces के बारे में. So this is the exact percentage increase. देखोगे सबसे ज़्यादा percentage increase 4.30% PEI प्रिंस एडवर्ड आइलैंड में हुई है. देन यू विल सी नोवा स्कोशिया, न्यू ब्रंसविक, यहाँ पे सबसे ज़्यादा ग्रोथ हुई है. एल्बर्टा में काफ़ी ग्रोथ हुई है. एंड इफ़ यू सी अपार्ट फ्रॉम दैट ओंटारियो, मैनिटोबा, सस्कैचुअन, तो सारे ही प्रोविंसेस में काफ़ी ग्रोथ हुई एक्सेप्ट द नॉर्दर्न वेस्ट टेरिटरीज. इट्स अ वेरी कोल्ड एरिया, सो इट्स -0.20%. So that is what the data is, quarterly data is. Next thing and last thing I want to discuss is about pros and cons. क्या pros हैं, क्या cons हैं, कनाडा आने में क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, right? So अगर कनाडा के pros की बात करोगे तो it's a very good country, it's a very nice country. The economy is very strong and stable. Lot of job opportunities are there for you. Quality of life is very good, especially for the kids. एजुकेशन, हेल्थ केयर, सोशल सर्विसेज की बात करोगे वो बहुत अच्छा है. इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है. मैंने अपने चैनल पे कुछ क्विज भी डाले थे. Thank you whoever has answered, and please friends, make sure you subscribe the channel and like the video. Okay, comment if you have any questions. So this is my channel. If you haven't subscribed yet, please do, because there I'm sure you're liking it. If you have any questions, please feel free to respond back to me, and I'll be more than happy to answer you. We are discussing pros of immigrating to Canada. So there's a lot of multiculturalism here. Free healthcare system है residents के लिए. ब्यूटीफुल प्लेसेस हैं. पार्क्स जाओगे आप, हिल्स में जाओगे, माउंटेन्स जाओगे, अल्बर्टा साइड, इट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल प्लेस. एक्सीलेंट यहाँ का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है. यूटिलिटीज देखोगे, हाइड्रो, हीटिंग, वाटर. कनाडा हैज़ अ वेरी लो क्राइम रेट. इट इज़ वेरी सेफ फॉर फैमिलीज टू लिव हेयर. इट हैज़ वेरी क्लीन एयर एंड वाटर एज वेल. सो बहुत ही अच्छी जगह रहने के लिए. Canada gives opportunities for entrepreneurship and business growth as well. If you want to do business here, Canada also has access to a lot of advanced technology and innovation. Canada is also progressing very highly on the social policies globally. It has a very good high standard of education and research opportunities. It's a very welcoming and supportive environment for the newcomers. So there are a lot of opportunities here in Canada. But if I talk about cons, there are some cons. So हर चीज़ के कुछ ना कुछ दो पहलू होते हैं. You know, if something is good, something is bad as well, right? So if I talk about the cons, cost of living is very high. If you especially move to the big cities like Toronto, like Vancouver, in cities में cost of living बहुत high है. Housing prices are too high. Transportation prices, education expenses, ये सब काफ़ी high हैं. If you have any questions, you can reach out to me and I can guide you through that. Smaller cities में अगर आप मूव करोगे, लाइक जैसे कि न्यू ब्रंसविक है, नोवा स्कोशिया, द प्राइसेस आर कंपेरेटिवली वेरी लो. स्पेशली अगर आप देखते हो, आप नए यहाँ पे मूव करते हो कनाडा में, घर का रेंट देखते हो या घर आप बाई करने का सोचोगे सम टाइम, यू नो, देन द प्राइसेस आर रियली क्वाइट लेस दैन बिग सिटीज़. बट बिग सिटीज़ में अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं. छोटे सिटीज़ में भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ऐसा नहीं है कि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, बट कंपेरेटिवली लो है. जॉब मार्केट इज़ वेरी कॉम्पिटिटिव. स्पेशली कुछ पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज या प्रोफेशंस की बात करूँ तो काफ़ी कॉम्पिटिटिव जॉब मार्केट है. बट इफ़ यू डू अ प्रॉपर रिसर्च, इफ़ यू हैव गुड स्किल्स, नो प्रॉब्लम्स, यू नो, देयर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज देयर. इमिग्रेशन प्रोसेस ऑफ कोर्स कनाडा का थोड़ा लेंदी है, जिसकी वजह से यहाँ टाइम ज़्यादा लगता है आने में. बट एक बार हो गया, आ गए, देन इट्स वेरी गुड. कुछ सिटीज़ में, कुछ प्रोविंसेस में लैंग्वेज बैरियर्स हैं. लाइक वहाँ पे फ्रेंच स्पीकर्स ज़्यादा हैं. लाइक इफ़ आई टॉक अबाउट मॉन्ट्रियल और क्यूबेक प्रोविंस, वहाँ पे सिटी में बात करोगे तो वहाँ पे भी बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट सिटी दे हैव मोर फ्रेंच स्पीकर्स. न्यू ब्रंसविक में भी इट्स ऑल्सो अ बाइलिंगुअल प्रोविंस ऑफ कनाडा. वेदर काफ़ी कोल्ड है, काफ़ी हार्श है काफ़ी रीजन्स में. नॉट ऑल द रीजन्स, बिकॉज ब्रिटिश कोलंबिया में द वेदर इज़ क्वाइट गुड ऑल ओवर द ईयर. बट इफ़ यू टॉक अबाउट द ईस्टर्न प्रोविंसेस एंड द नॉर्दर्न प्रोविंसेस, वो वेदर बहुत हार्श है. सो प्लान अकॉर्डिंगली वेर एवर यू वांट टू गो. अदर देन दैट, main initial issue आता है to build your credit history. Once you come here, you have to make sure, you have to show to the government that you are paying your bills on time, you're not taking too much credit, and you're
maintaining your credit history, credit score. So that is another cons that they face initially. Okay, health insurance, जब भी starting में आओ Canada तो लेके आओ or get an external health insurance, because it takes a couple of months, 2-3 months to get a health card. If you earn your salary, taxes are quite high, so that is another cons. I'll say property taxes especially are very high. If I talk about India, the property taxes are quite very low than compared to in Canada, and as well as insurance cost. Car की insurance cost is very high. Elders की बात करोगे तो it's a little bit difficult for them because the medical services are very costly. Some extent is covered by healthcare or healthcare system or your health card, but there are some services which are not covered under the health card, under the health plan. Rest weather का मैंने बात किया. So weather, snowstorms, this is the only things that make it tough. Other than that, it's a very good country, and I think my conclusion will be, I think you should certainly look forward to move to Canada. If you are planning to, plan it proper, do a proper research. Okay, if you have any questions, I can help. I would be more than happy. And please, friends, make sure you subscribe to the channel, share the video to all your family members and friends, and help them as well. Thank you.